ओके, मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? अरे कोई ऐसा Yes, तो sir. कोई Yes, sir. तो फिर कैमरा ऑन करो जल्दी से। ओके, तो हम ये कर रहे थे ये प्रिलिमिनरी कुछ काम टू प्रूव दी बानाक-स्टोन थ्योरम। तो हमने कुछ डेफिनेशंस की लास्ट टाइम और कुछ रिजल्ट्स भी किए। सो ये जरा कम ऑन, इसको जरा कैमरा ऑन करो ना, अटेंडेंस है तुम्हारी। रोल नंबर 34, 16, 14, 9, 3, 25, 20, 30 सभी। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली मैं देख रहा था बानाक-स्टोन थ्योरम का एक और तरीका भी है करने का, बट देन वी हैव टू नो व्हाट इज द बानाक अलजेब्रा, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स। वो किया है सिमंस जो है ना, उसकी किताब का जो लास्ट वाला पोर्शन है। और एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम जो मेरे स्टूडेंट्स से प्रोजेक्ट में हमने वही तरीका किया था बानाक अलजेब्रा से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है। अगर तुम उसको भी देखो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो वो तरीका भी है टू प्रूव दिस बानाक-स्टोन थ्योरम। बट लेट्स डू, क्योंकि अभी हमने बानाक अलजेब्रा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मतलब एज पर आवर सिलेबस। तो therefore we will continue with looking at this normal linear spaces and Banach spaces. चलो, okay. So let me write down another theorem जो कि हमारा वही preparatory theorem है एक तरह से। Theorem ये है, इसका statement कि if x and y are normal linear spaces, let x and y be normed linear spaces and consider, just a minute, and t from x to y be an isometric isomorphism, यानी अब ये इतनी बार हम कर चुके हैं, something that preserves the norm as well as the linear structure and it's a bijection. Isometric isomorphism then t star जो है, तो इसका adjoint है t star, which is a map from, as you know, y star to x star. Then t star is a weak star homeomorphism. Weak star homeomorphism from by star, that is the unit closed balls in y star, onto bx star. Okay, so तुम्हें पता ही है अगर t है the bounded linear map from x to y, so definition of t star from y star to x star is defined as t star at y star is equal to y star composition t. So this is the definition of the adjoint. तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी t star को restrict करें to the unit ball in y star, right? Then this is a map from, this is a homeomorphism. पहले तो ये है कि इसकी जो range होगी वो होगी within bx star, और ये continuous होगी from both sides, and of course it would be 1-1 on 2. Proof इसका तो हम कर चुके हैं कि अगर t
आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है तो टी स्टार भी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है. Now we know that if T जो हम कर चुके हैं शायद लास्ट टाइम, T is an isometric isomorphism, then so is T star, and so is T star, okay, as such that, और ये भी हमें पता है ये जो T star का इनवर्स है वो है T इनवर्स का स्टार. तो ये हम कर चुके हैं. So it means that it is 1-to-1. पहली बात तो ये है, ये जो मैप है T स्टार उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी वो 1-1 होगा. So it's 1-1. So it's तो 1-1 है और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस है. So तो हमें दिखाना है बेसिकली इट्स वीक स्टार कंटिन्यूअस, नॉट जस्ट कंटिन्यूअस, राइट. हम ये कह रहे हैं कि अगर हम वीक स्टार यानी वाई स्टार पे वीक स्टार टोपोलॉजी लेंगे, राइट, और एक्स स्टार पे वीक स्टार टोपोलॉजी देंगे, अंडर दोस टोपोलॉजीज इट्स एन होमोमॉर्फिज्म. बट वी नो दैट दिस मैप इज 1-1 तो है ही, तो 1-1 प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म अंडर नॉर्म टोपोलॉजी. तो नॉर्म टोपोलॉजी जो भी हो, लेकिन इसके लिए आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म के लिए बाइजेक्शन तो होना जरूरी है, राइट. 1-1 होना तो जरूरी है. सो इट्स suffices to show that, तो हमें इसका सिर्फ कंटिन्यूटी का ख्याल रखना है, मतलब वीक स्टार कंटिन्यूटी. So it suffices, it is sufficient to show that T star and T star inverse are weak star continuous. Weak star वैसे डरने की जरूरत नहीं है ना, ये weak star just use the definition, ऐसा कुछ complicated नहीं है. We can describe any topology in terms of its nets. So weak star topology में हम net लेंगे. So let y star alpha be a net in y star such that it converges to some limit under weak star topology, such that y star या limit y star alpha is equal to y star. अब यहाँ पे लिखना है weak star topology में हम ये limit ले रहे हैं, यानी by that we mean, मैं कह रहा हूँ weak star topology, इसका मतलब limit y alpha star at y is equal to y star at y for all y belonging to y. Now this is what I mean by weak star. Okay. Right. So consider, हम इसका लिमिट लेंगे कि, तो अगर मुझे दिखाना है T star is weak star continuous, या T, तो I have to show that T star y star at alpha converges to T star at y in the weak star topology. So that, well, that's very easy to do actually. So limit of alpha of this range net that we get from the domain net, or net in the domain y star alpha. Now this is a functional, so if we want to know what it is, we have to see how it applies on x, right? Because ये जो है, it belongs to x star. T star is a map from y star to x star. Now this would be equal to limit over alpha, by definition of the adjoint, this should be y alpha star applied to T of x. This is just the definition of the adjoint. But then it can be written as, now since y star alpha converges to y, so it means y star alpha at all y, and of course tx belongs to y, so this must be equal to y star of tx. But that by definition is nothing but T star applied to y star of x by the definition of the adjoint. So since this converges to this for all x का मतलब this converges to
this thing is a function converges to T star Y star in weak star topology. So it means that T star Y star alpha Y alpha star converges under weak star topology to T star of Y star, which implies that T star is continuous. तो था ना easy. तो मुझे नहीं लिखना चाहिए continuous. I should write weak star continuous in this particular topology. Second, now let अब हम T inverse को पकड़ते हैं. Now let X alpha star be a net in, of course alpha belongs to some delta, वो तो पता ही है. Be a net in X star such that X alpha star converges under weak star topology to this X star belonging to X star. We show that the inverse map is convergence को preserve करता है so that it's weak star convergent and weak star continuous. And now let Y belong to Y. So I'm interested in the limit alpha, limit over this in Rubik's index set है T star inverse, because मैं इसकी continuity check करना चाहता हूँ. But T star inverse is a map from X star to Y star, so it would apply to X star. So I take X alpha star now, but T star inverse of X alpha star would belong to Y star. So therefore it's a function on Y. So I apply it to Y. But this can be written by what we know about this T star alpha ka inverse. This is the same thing as T inverse star, because we know that this is equal to this function of X star at alpha baki as it is. But this, by the definition of the adjoint, P limit alpha, this is just the definition of the adjoint, it would be X star alpha applied to T inverse of Y. But since this converges weak star to this thing, so it should be just X star at T inverse of Y. But by definition of adjoint, this is actually T inverse star applied to T star at Y. So that would be T inverse star is basically T star inverse. So it is T star inverse applied to X star applied to Y. अब इसका limit जो है, this is true for all Y. It means this sequence जो मैं यहाँ highlight कर रहा हूँ converges to this vector in weak star topology. That is, it implies that T star inverse of X star, X alpha star converges under weak star topology to T star inverse at X star, which implies that T star inverse is also continuous. तो होम्योमॉर्फिज्म तो हमारा हो गया. Also onto तो हो गई. Also क्योंकि हमें पता है 2T जो है वो आइसोमेट्री है, तो इट वुड सेंड यूनिट बॉल टू यूनिट बॉल, क्योंकि ये लेंथ के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकता. So that By star is mapped onto Bx star. So hence T star is a weak star homeomorphism, and of course such that T star of By star, ये हम यूज करेंगे, is equal to Bx star, provided T is an isometric isomorphism. तो ये हमारा काम हो गया एक वाला थ्योरम. एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हम यूज करेंगे. After this we are going to go for Banach-Stone theorem. So let X be a compact Hausdorff space. Compact Hausdorff space
and consider the map by f of x, f from this x to cx star, cx cut 1 under weak star topology by defined as हमारा जो मैप है that is f of x is equal to del x. अब जरा मुझे del x को समझाना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा. Then जो हम f is well defined and a homeomorph onto its image. यानी it's not onto, but it's अगर मैं restrict करूं to the image of the function, it's a homeomorph onto its image. Of course, image का मतलब है f of x, of course under weak star topology. पहले ये कि del x हम इससे पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, राइट? तो हमने किया था del x belongs to our collection of measures, the Borel measures, on a compact Hausdorff space X. It was defined by del x of A is equal to 0. If X does not belong to A, this is equal to 1 if X belongs to A. तो ये हमने ऐसे किया था. इसी तरह से we can define del x. तो it means that del x जो मैं कह रहा हूँ measure है. So it means del x is a map from this Borel algebra, Borel sigma algebra on this topological space X to, of course, set of complex numbers with this property. But del x can also, in a way, we also have another, इसको हम बोलते हैं usually Dirac measure. No, Dirac measure की भी अपनी कहानी. उससे एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांचेस से शुरू हो गई. मतलब ना ये आइडिया कि कोई चीज ऐसी हो सकती है कि एक पॉइंट पे इसका वैल्यू, मतलब it's just defined on one point. Actually, there is something called Dirac delta function, which is infinity at one point but zero everywhere else. Anyway, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा. I can define this from the set of continuous functions to the field K by del x is equal to del x at f is equal to f of x. So then this is a functional. Then तुम दिखा सकते हो कि del x linear है और continuous है. So del x belongs to मेरे कहने का मतलब है cx star. But we know something, that there is a one-to-one correspondence between by Rees representation theorem. Cx star जो है is the same thing as mx. It is isometrically isomorphic to mx. And जो association है वो है f of f mu of f, ऐसा कुछ हमने किया था शायद, is equal to integral f d. Right? So you have f for any continuous function. अगर मैं ये इसमें इनपुट डालूं, ये वाली फंक्शन, अगर मैं लूं f mu of f जो होगा, so वो होगा एक्चुअली del x at f. यानी यहाँ पे जो फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शनल है corresponding to that measure, यानी अगर मैं लेता हूँ इंटीग्रल, अगर मैं मेजर की जगह लूँ del x, यानी अगर मैं लूँ f x d del x, अगर मैं ये वाला मेजर लेता हूँ, यानी जो मैंने यहाँ डिफाइन किया था, what I get is the value of this function at f. Well, that's not that difficult to see using the property of the measure, right? Because this is over the whole space x. So this is actually equal to f of x into del x of x. Basically, this is, this is f of x into the measure of x, क्योंकि ये हर जगह 1 है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है throughout this set इस मेजर पर. So which would be just f of x, क्योंकि del x of x is equal to 1. मेरे कहता है मतलब corresponding to this measure there exists a functional in cx star which is defined like this. Now it is a bounded linear functional, scalar valued. ये तुम आराम से चेक कर सकते हो. कैसे चेक करना है? You have to see del x of f.
1 plus f2 किसके बराबर होगा? It would be f1 plus f2, but we know that the pointwise operations in Cx जो है set of continuous functions, so it would be f1 of x plus f2 of x. इसी तरह से scalar multiplication भी, और ये continuous है, यानी under norm topology, और norm जो इसका है वो है supremum over x belongs to x modulus of f of x. That's our norm of f. Okay, now अब क्या करना है? We just have to show that it's continuous, है ना? We just take del x at f, वो है of course it is just fx, which of course would be less than equal to supremum x belongs to x mod of fx, that's equal to norm of f. So del x at f, जैसा कि तुम्हें पता ही है, is less than equal to some k times, यानी 1 times norm of f for all f belonging to the continuous functions on x. Okay, now this x just मतलब इसके लिए x का compact होना जरूरी है. Otherwise we take something called C0x. अगर खाली locally compact हो, but we don't need to go there. Okay, so that was about this corresponding functional in Cx star, which is defined by the value of the function at that point. And if देखो कहने का मतलब for every x belonging to x, there exists del x belonging to Cx star. तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ. Similarly, I can say for every x belonging to x, where x is a compact Hausdorff topological space, there exists a measure which is belonging to mx. And we know that they have a connection via this integral. Okay. So अब मैं दाएं से बाएं लिख रहा हूँ, ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे मैं उर्दू लिख रहा हूँ. मैंने पहले यहाँ लिखा फिर इधर इधर. ओके, डजंट मैटर. तो ये था इसके बारे में, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला फंक्शनल है. यहाँ पे del x का मतलब del x is the map from del x belongs to Cx star defined as del x at f is equal to f. Okay, so okay, पहले तो ये कि ये well defined है obviously. Now f is well defined. Proof. f जो मैप था f is well defined. अब before तुम भूल जाओ f क्या मैप था. f was a map from x to Cx star, लेकिन अब यहाँ पे है कि Cx star पे हम इसकी weak star topology ले रहे हैं. So it was defined by f of x is equal to this Minkowski, पता नहीं इसको Minkowski function कहते हैं, Dirac function. अब मुझे पता नहीं Minkowski, लेकिन हमें क्या है, हमें तो definition से मतलब. लेकिन इसकी एक स्टोरी है, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर. इसकी एक स्टोरी ये है कि 1950 में फील्ड्स मेडल जो मिला था शॉर्ट्स को, तो उसने इस पे एक लंबी चौड़ी थियरी खड़ी कर दी थी, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जो इन आइडियाज को अच्छे से इंक्लूड कर सके. एनीवे, तुम देख सकते हो व्हाट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन और जनरलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि वॉन न्यूमन को बड़ी प्रॉब्लम थी डिराक से. उसने बोला था ये जो एक क्वांटम मैकेनिक्स का ये बता रहा है, ये तो एक अफसाना है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन यूज हो रही है वो फंक्शन ही नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. तो लॉरेंस शोर्ट्ज ने बोला मैं मतलब, लेकिन उसने वॉन न्यूमन का कमाल ये था कि उसने किसी और रास्ते से क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया. लेकिन फिर लॉरेंस शोर्ट्ज ने बोला नहीं, हम इस फंक्शन को भी ले सकते हैं in a bigger set of things called generalized functions, which are more general than the function itself, and now we call them distributions. Okay, तो पहले तो ये कि f is well defined because if x1 is equal to x2, that's very straightforward. x1 अगर x2 के बराबर है, it would imply that of course x1 minus x2 is equal to 0. ये उसका मतलब तो बनता है f of x1 minus x2 is equal to 0 for all f belonging to Cx star. Should I write it Cx star? ये तो गड़बड़ हो गई, मैं क्या कर रहा हूँ.
हाँ, हम इसका काउंटर पॉजिटिव कर सकते हैं अगर f of x हाँ, इसका काउंटर पॉजिटिव, क्योंकि अगर f of x1 नीड नॉट बी 0। हाँ, अगर ये डबल में होता वो दूसरी बात थी, डबल लीनियर होता है, दैट वुड सेंड 0 to 0, लेकिन कंटीन्यूअस फंक्शन नीड नॉट सेंड नॉन जीरो नंबर। ओके, तो वेल डिफाइंड के लिए हमें क्या करना है? वेल डिफाइंड, हाँ, इट्स वेल डिफाइंड बिकॉज फॉर एवरी x belonging to x there exists del x, a unique del x, है ना, because it sends del x of f to f of x. So this is a unique functional out of this. तो f is well defined करने की हमें जरूरत ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दो जगह, because this del x is unique, this del x is the unique functional that sends every functional to its value. So it is known by this values of f at different points, and of course you cannot have del x at f. No, you cannot have different functionals. That would be right. हाँ, बिल्कुल, मतलब f is well defined. That's obvious because of definition of it. Now we prove that f is continuous. F is continuous. x1 x2 के बराबर हो, हमें देखना है f of x1 और b equal to x2. चलो हम थोड़ा सा रुक सकते हैं, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा? Yeah, then there exists definitely f belonging to cx. अब मुझे याद आया, such that f of x1 is not equal to f of x2. ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उससे ये प्रूव होगा ये 1 1 है. अगर हम ऐसे करें, इसका काउंटर पॉजिटिव करें कि अगर del of x1 is not equal to del of x2 implies that del x1 at f is not equal to del x2 at f for some f belonging to cx, which would imply that f of x1 is not equal to f of x2 for some f belonging to cx. अरे नहीं, मुझे लगता है इट्स वेल डिफाइंड, खामखा मैं इसमें उलझ रहा हूँ, क्योंकि by definition this is a unique functional for each x. It cannot be equal to some other, या फिर इसको बाद में देखेंगे. So we will revisit this in case मुझे शक लगा. वैसे मुझे लगता है it's straightforward, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं है नोट्स में, तो it has to be like that. And of course ये जो functional है इसका norm 1 है, वो तुम पे मैं छोड़ता हूँ. Sure that norm of del x जो है it is equal to 1. it's a norm. Three lines का ज़्यादा कुछ करना नहीं. Okay, so we have shown that f is continuous. Okay, so let f belong to this set of continuous functions cx, and x alpha जो है alpha belongs to index of delta be a net in x, such that x alpha converges to x belonging to x. ठीक है? So if x alpha, so for each x there is a functional del x, so we get a corresponding, so we get a corresponding net of functional, so we get a corresponding del x alpha belonging to delta in cx star. So that's what we have, and limit alpha del x alpha at f, this f belonging to cx
would be by definition equal to limit alpha f of x alpha. But f is continuous function, so it would preserve the convergence of the nets. So this is just equal to f of x, which is the same thing as del x of f. So इसका मतलब del x alpha converges to, now since this is for all f inside this Cx, it implies that del x alpha जो है, it converges under weak star topology to del x, del sub x. So that is f of x alpha by definition of the function converges under weak star topology to fx. Hence f is continuous. Is continuous. Now to show that f is 1, 1, now let x, y belong to x and x be not equal to y. We show that f of x is not equal to f of y to conclude that f is 1 to 1. Actually, जो हम usually करते हैं उसका counter positive, that f is 1 to 1. Now, see, Raison's lemma से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है. चलो. Now, since x is compact Hausdorff space, वही लिया था ना मैं x को. Compact Hausdorff space is normal, and hence normal. So I apply, therefore, by Raison's lemma. In the Raison's lemma, there exists a continuous function. Shall I write small f from x to k such that the range is contained in the unit interval. F of x is contained inside the unit interval, and this set f of x जो है is equal to 0 and f of y जो है वो 1 के बराबर है. Thus, of course, उसका मतलब है fx जो है जो कि है del x at f is not equal to del y at f, which is equal to f. Oh, ठीक है. So 1 1 हो गया, continuous हो गया, लेकिन हमें दिखाना है. Therefore, I can say that this function f is, अगर मैं restrict करूं to range under weak star topology, is a continuous bijection. Continuous bijection. So I've got a function where the values are this, right? क्योंकि fx का value 0 है, तो उससे का value 1 है, तो of course, so del x f 0 है, del f y ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है. Okay, तुम्हें याद रखना है, this is your fx जो कि 0 है, this is your f of y जो यहाँ, नहीं मैं इसको देख रहा था, कहीं गलत तो नहीं होगा. So it's a continuous bijection. Also now, weak star topology is Hausdorff. ये भी तुम्हारा home assignment होगा. Hausdorff मतलब it's easy to do. Actually मैं यहाँ लिख देता हूँ home assignment, both weak and weak star topologies. Norm topology तो होती है, metric topologies और Hausdorff. लेकिन so this is a Hausdorff topological space, and therefore f is a continuous bijection from a compact space x, from a compact space x to Hausdorff space
f7 f of x. So therefore it must be a homeomorphism. It's easier to, it's matrix based में तुम करते ही हो ये. Therefore f from x to fx under weak star topology is a homomorphism. Any map that is continuous and bijective, its domain is compact, its range is Hausdorff, would be a inverse be continuous. Easy to prove. Simmons में simple सी मतलब simple सा उसने prove दिया है 4-5 lines का जो तुम देख सकते हो. So that finishes our another thing. Now we come to Bana